Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Shahzad. Today our discussion topic is about Sertoli cell tumor with coal-actin-like bodies in a dog. Case history: the age of the dog was 14 years and has retained testes called cryptocard and unilateral castrated. The chief complaint of owner was gradual breast enlargement over a period of time. And during routine exam, abdominal mass was detected and then referred to a Unicore Animal Hospital. जो एज ऑफ डॉग थी वो 14 साल थी और उसके जो चीफ कंप्लेंट ये थी कि उसके जो ब्रेस्ट थे वो इनलार्ज हो रहे थे और रूटीन एग्जाम में उसमें एक एब्डोमिनल मास भी डिटेक्ट हुआ. फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग: abdominal palpation, a firm palpable mass in the caudal abdomen with the location of retained testes, and also enlarged mammary gland called gynecomastia was present. On blood report, everything was normal except elevated blood urea nitrogen. On CT scan, a large well-defined mass in the caudal abdomen was present. Fine needle aspiration: during ultrasound, a fine needle aspiration was performed for diagnosis. Crucial macroscopic finding characteristic of a Sertoli cell tumor. Cell morphology: cell were predominantly rounded to elongated, showing variability in size and shape. Cytoplasm was noted as light blue. Nuclei were slightly large and uneven, suggesting mild pleomorphism. Coal-actin-like bodies: the presence of pink circular centers surrounded by cell coal-actin-like bodies was a key diagnostic finding and despite the absence of mitotic figures. इसमें जो ये है कि हमें जो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें नजर आया वो ये था कि उसके मेमरी ग्लैंड इनलार्ज हुए थे और उसके साथ एब्डोमेन में ना एक मास नजर आया जो कि रिटेन टेस्टिस के करीब था और ब्लड टेस्ट में भी हर चीज नॉर्मल थी, सिर्फ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यूज थोड़ी बढ़ी हुई थी और सीटी स्कैन में उसके कॉडल एब्डोमेन में रिटेन टेस्टिस के साथ एक मास नजर आया और फाइन नीडल एस्पिरेशन में हमें coal-actin-like बॉडीज की कंफर्मेशन हुई. सर्जिकल इंटरवेंशन एंड मैक्रोस्कोपिक फाइंडिंग: आफ्टर 2 days of imaging and cytology, laparotomy was performed. Surgical approach successfully isolated and removed a firm oval mass. This mass originated from the retained testicles. Gross appearance: upon sectioning, tumor presented with a variegated cut surface in color from light brown to white. The texture was firm. Histopathological finding: these cells were non-encapsulated and also originate from the seminiferous tubules, and it looks like coal-actin-like structures. Panel morphological diagnosis: Sertoli cell tumor with coal-actin-like bodies and clinical presentation with feminization syndrome. Case summary and post-operative outcome: the entire clinical picture from history to post-surgical observation aligned perfectly with the diagnosis of a hormone-secreting cell, Sertoli cell tumor. Origin and risk factor: the tumor originated from the retained testes, highlighting the significant cancer risk associated with this condition. Hormonal effect: the tumor secreted excess estrogen will directly lead to the development of the feminization syndrome, clinically manifesting as gynecomastia. Following the successful surgical excision of the mass, the owner reported that the gynecomastia regressed completely. तो इसकी समरी ये है कि जो डॉग था ना उसमें जो ट्यूमर ओरिजिनेट हुआ था, जो एब्डोमेन में एक मास बना था, उसकी वजह ये थी कि वो उसमें रिटेन टेस्टिस थे यानी क्रेप्टोकार्ड था, वो उसके जो टेस्टिस थे वो डिसेंड नहीं हुए थे स्क्रोटम में, जिसकी वजह से ट्यूमर डेवलप हुआ. ट्यूमर डेवलप होने की वजह से एस्ट्रोजन जो है ना वो सिक्रीट हुआ एक्सेस अमाउंट में और जिसकी वजह से ना gynecomastia या फेमिनाइजेशन सिंड्रोम डेवलप हो गया. और जब सर्जरी की गई तो सर्जरी के बाद ये gynecomastia जो रिग्रेस्ड कंप्लीटली हो गया यानी डॉग अब नॉर्मल हो गया. तो इससे यही पता चलता है कि रिटेन टेस्टिकल की वजह से सर्टोली सेल ट्यूमर हुआ जो कि एक्सेस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन की वजह बना और उसकी वजह से gynecomastia डेवलप हुआ. Association between Sertoli cell tumors and retained testes. Sertoli cell tumors are biologically significant due to their strong association with retained testes and their endocrine activity. Sertoli cell tumors are one of the 3 most common testicular tumors in dogs.
Streptocytism dramatically increase the risk of Sertoli cell tumor development by approximately 23 times. While benign in most cases, approximately 25% of the affected dog exhibit clinical sign of immunization syndrome. तो इसमें यह है कि सर्टोली सेल ट्यूमर जो है वो रिटेन टेस्टीज की वजह से 23 टाइम इसका रिस्क बढ़ जाता है और 25% जो इफेक्टिव डॉग होते हैं वो इम्यूनाइजेशन सिंड्रोम शो करते हैं।